Okay, dear friends, today we may witness this type of difficulties in the lecture. As I have connected my lecture through phone, my laptop is not working today. As my laptop is not working today, we may witness such type of practical difficulties because I'm taking up lecture directly on the phone. I hope अभी आपको आवाज आता रहेगा. ओके सो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इफ यू रिकलेक्ट उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को स्टडी किया था. कैन यू टेल मी व्हाट वर दोस 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी? डिकुना, यू प्लीज हेल्प मी. Dikuna, I want your help. Let me know the 3 types of utility we studied. और कोई हेल्प करेगा? Is anybody else going to help me out? Three types of utility हमने स्टडी किया था. Sorry, elasticity. Price elasticity, income elasticity and cross elasticity. उसमें प्राइस इलास्टिसिटी के हमने कितने टाइप स्टडी किए थे? 5 types. Very good. When I say the coefficient of elasticity is infinite, when coefficient of elasticity is infinite, what will type of elasticity? Perfectly elastic. Very good. And when it is greater than 1, it is elastic or also known as relatively elastic. Fine. Very good. उसके बाद हमने इनकम इलास्टिसिटी में भी मैंने बताया था इनकम इलास्टिसिटी 3 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. Income elasticity can be positive, it can be negative, or it can be zero. If it is positive, it represents normal goods. If it is negative, it represents कौन से मैं भूल गया. If it is negative, they are which type of goods? Inferior goods. Very good. And if the income elasticity of demand is zero, we can say that the goods are necessary goods. The goods are necessary goods. वैसे ही हमने क्रॉस इलास्टिसिटी का देखा था. It can be positive, it can be negative, or it can be zero. When cross elasticity of demand is zero, it represents dash type of goods. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अनरिलेटेड गुड्स, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट कि इतना याद रख रहे हो, आई अप्रिशिएट। दिस इज द साइन of you as a professional student. Very good. I appreciate. Now, dear friends, I need to tell you one very interesting thing that, as I said few minutes back, I have some technical problem with my laptop. I may not be able to share any presentations with you. मैं सिर्फ बोलूंगा और उससे रिलेटेड कंसेप्ट में जितना डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ डिस्कस कर दूंगा एंड देन आई टर्मिनेट द लेक्चर. Jesse, today in my lecture, I'm going to describe the meaning of supply. After describing meaning of supply, we would be describing stock, and thereafter we would describe differentiation between supply as well as stock. And finally, we will describe factors influencing supply. Factors influencing supply would be the last part that we describe. तो अब तक हम जो डिमांड का पार्ट स्टडी कर रहे थे, यू हैव टू रिमेम्बर डियर फ्रेंड्स दैट जब हम डिमांड स्टडी कर रहे थे तो वी वेर कंज्यूमर. अभी जब आप लोग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी स्टडी करोगे, when you are going to study supply of a commodity, you should remember that henceforth we are no longer a consumer, but we will become a producer or we will become a seller. A producer or we will become a seller. Supply. Supply का meaning क्या है? See, note down the meaning. As I said, I cannot share any slide. I cannot write. तो supply का meaning क्या है? Describe करो. Describe कर रहा हूं मैं. आप लिखो. Supply refers to total quantity of goods and services. Total quantity of goods and services offered by the seller, to the market, offered by the seller to the market at given market price. At given market price. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑफर्ड. ऑफर्ड वर्ड जो है उस ऑफर्ड वर्ड को अंडरलाइन कर दो. ऑफर्ड का सिंपल मीनिंग मैं आपको क्या बताऊंगा. द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफर्ड मतलब द सेलर इज रेडी टू सेल. रिमेंबर, द सेलर इज रेडी टू सेल. You should remember that. Seller is ready to sell. Where he is ready to sell? Where the seller will be selling the goods? Tell me. Where the seller will sell the goods? Market. So the quantity of goods and services. The quantity of goods and services. What? A seller is ready to sell. बहुत important है. और वो भी क्या है? At given market price.
at the price which is prevailing into the market. At the price which is prevailing into the market, the quantity what a seller is